conversation topic. Good evening, ma'am. Good evening. Yeah. Ma'am, actually, I have a query. Ask. Ma'am, let me share my screen with you. Yeah, sure. Where is the cursor? What is cursor? Ma'am, are you able to see my screen? Yes. Ma'am, actually मैं जितने भी टेबल्स और फॉर्मेट्स मिले हैं हमें और मैं ट्राई कर रही हूँ बट मैम मैं जब भी एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरा हमेशा एरर ही जाता है। इवन मैं नेम अगर चेंज भी करती हूँ, जैसे यहाँ पे बता रहा है दैट द ऑब्जेक्ट नेम रीजन इज ऑलरेडी इन द डेटाबेस, ठीक है? हाँ, तो आप डेटाबेस खोलो ना। ये देखो, यहाँ पे राहुल के नाम का जो डेटाबेस बनाया आपने, उसके अंदर के यस मैम। टेबल खोलो। टेबल्स क्लिक करो। यस मैम, इसमें तो नहीं है। टेबल सिस्टम टेबल क्लिक करो। कहाँ बनाया आपने? चेक करो, जस्ट 1 सेकेंड। फाइल टेबल्स, एक्सटर्नल टेबल्स क्लिक करो, क्योंकि वो आपका सेटअप ही इंस्टॉल प्रॉपरली नहीं है। नहीं नहीं नहीं, योर सिस्टम, आपने जो इंस्टॉलेशन किया है वो आपने SQL एक्सप्रेस का किया हुआ है, उसमें लिमिटेड एक्सेस है आपका। तो मैम ये कहाँ से होगा? मैम एक्चुअली कोई भी मैं फॉर्मेट डाल रही हूँ, जो भी आपने भी शेयर करा है तो वो भी नहीं हो पा रहा है, रन ही नहीं हो पाता है मैम, हमेशा एरर ही चला जाता है मेरा। एरर नहीं आ रहा है, वो ये हो रहा है कि आपको राइट्स ही नहीं है। मतलब आपने जब इंस्टॉलेशन किया होगा ना, उसमें राइट हम्म, सेटिंग करना पड़ता है। वो राइट्स आपने सेट नहीं होंगे वो फ्रीवेयर में, इसलिए वो आपको टेबल एक्सेस ही नहीं दे रहा है। तो मैम ये कैसे होगा? वो ठीक है, कनेक्ट करो। मैम ये कनेक्ट हो गया। हाँ, चलो डेटाबेस पे जाओ, राहुल पे क्लिक करो, टेबल्स पे क्लिक करो। हाँ, और मैम जैसे यहाँ पे रीजन का टेबल तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है? हम्म हम्म बट मैं जब भी अब इसको रन जब करती हूँ। ऑब्वियसली वो आपको एरर ही देगा। वो यही बोलेगा कि आपका ऑलरेडी ये टेबल का नाम है घर में क्या, हाँ सॉरी, ठीक है। डेटाबेस में। तो मैम अगर मैं इसको डिलीट भी कर देती हूँ, ओके, ऐसे डिलीट करोगे तो कैसे चलेगा? तो फिर? यू हैव टू डिलीट इट प्रॉपरली ना। डिलीट कमांड बताया था आपको, डिलीट टेबल, टेबल नेम, ऐसे डिलीट करो। ड्रॉप से ना? हाँ, ड्रॉप से, वही ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल। अब जो टेबल बचा हुआ है ना, लीजन, एल हाँ एल हाँ LEGION से करो। ठीक है एंटर करो। मैम। यहाँ पे यही हर बार आ जाता है मैम, मैं कोई भी क्वेरी डालती हूँ अरे ना वो बेटा, हमेशा ऐसा आप कुछ आ इसको जाता है। सिलेक्ट कब करोगे? यू हैव टू सिलेक्ट दिस क्वेरी, देन एंड देन इट विल कम टू नो कि ये एग्जीक्यूट करना है। ओके, यू डू नॉट मैम हैव अ परमिशन। ये देखो ना, आ रहा है ना बराबर से। आपको परमिशन ही लिमिटेड है, क्योंकि तो आपने फिर अब इस इंस्टॉल किया है, उसमें परमिशन लिमिटेड रहती है। वहां पे सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हो टेबल, आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, और आप जो सिलेक्ट कमांड की क्वेरीज है वो फायर कर सकते हो। यू कैन नॉट अल्टर द थिंग्स, यू कैन नॉट डिलीट द थिंग्स, क्योंकि आपके इसमें राइट्स ही नहीं है। आप देखो, यहाँ एरर में ही लिखा हुआ है, प्रॉपरली पढ़ो, आपको समझ में आएगा एरर क्या है। आपने एडमिन राइट से इंस्टॉल नहीं किया है। हाँ, तो मैम मैंने तो यूट्यूब से ही देख के इंस्टॉल करा था। मतलब मेरे और भी जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, सचिन, नैतिक, राहुल, तो उन्होंने जिस तरीके से इंस्टॉल करा था ना, जिस वीडियो के थ्रू, तो हम्म। मैंने भी वही सारे प्रोसेस फॉलो करके इंस्टॉल करा था। तो उनका तो रन हो रहा है सब कुछ, मेरा क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपने इंस्टॉलेशन किया होगा तो हम्म, आपके यूजर सेट होंगे लैपटॉप में, जैसे एडमिन होता है या ओनर होता है या आपका खुद का कोई नाम होगा, वो नाम से यूजर होगा, और गेस्ट यूजर लॉगिन होगा। तो वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट आने के कारण से वहां इशू आता है। तो फिर मैम बाकी ये सब ऑल कैसे गुड है, सही यही होगा? सब बराबर है, ये कोई चेंज नहीं होने वाला है। आपको री इंस्टॉलेशन के टाइम पे और आपको राइट्स देने पड़ेंगे। ये सब बराबर है, ये ये तो कोई चेंज मत करो। तो मेरे को फिर से ये री
रीइंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर बाकी And सारी then you need to चीजें। make the changes in the rights, right? ओके ओके। ओके मैम। It's clear now? यस मैम। ठीक है. So what was the last topic we were discussing? Average function, सारे हमारे aggregate functions की बात हो गई थी हमारी, right? Then today we will start with the few more clauses. That is a having clause. Okay, having clause नहीं discuss किया था हमने. So we are discussing having clause. Okay. One second now. Certain SQL SQL having clause. ये भी एक clause है. कैसे काम करता है ये? मैम एग्रीगेट फंक्शन। Aggregate function. I don't understand how it actually works. मैम फर्स्टली ग्रुप बाय यूज होता है ना, देन फिर उसके बाद ये हैविंग क्लॉज आता है, लाइक जैसे कि न्यूमेरिक में कि लाइक वेयर क्लॉज तो यूज नहीं हो सकता ना ग्रुप बाय के बाद, देन यूजिंग अ हैविंग क्लॉज। Exactly. तो having clause जो होता है वो होता है it's basically used to allow you a specific condition. Okay, condition on the group. Okay, so basically ये use होता है condition on the group. और जब आप group पे condition apply करते हो आगे चल के, तो वहां पे कौन सा use होता है आपका? Group by. Okay, so group by clause. Okay, group by clause के साथ having, ये दोनों hand to hand काम करते हैं. और वो कैसे काम करते हैं, that we will be discussing now. Okay, so for example, अगर मुझे I just want, okay, कि particular column का aggregate निकालो from a table 1, उसको group by करो 2 column में जिसमें कोई कंडीशन डाली हो. ओके, तो अगर मुझे ऐसी कोई क्वेरी लिखनी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेरी कॉन्सेप्ट है ये. ओके, सो मुझे कॉलम 1 कॉलम 2 चाहिए है और ऊपर से मैंने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन भी लगा के रखा हुआ है. कोई भी एग्रीगेट फंक्शन किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगाया हुआ है. ओके, मैं एक जेनरिक फॉर्म बता रही हूँ. ओके, फ्रॉम टेबल 1, लेट्स से कोई भी टेबल है, वहां पे मुझे पहले ग्रुप बाय करना पड़ेगा. ओके, जिसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2. ओके, एंड देन हैविंग group condition. Okay, so this is how my having and group by works together. Okay, so let's talk about the query which will be reflecting or which will be fetching the data from 2 tables. Let's say employees table and say department table, और employees table और dependent पे हमने एक भी बार कुछ भी query नहीं लिखी है, so we will talk about a dependent table. Okay, now what I want to get the manager and their direct report is, okay, whose direct report is, हाँ, अगर मुझे जैसे I want to get I just write it the query what actually I want. Okay, I want a manager. Okay, manager कहाँ से आएंगे? It will come from the employee table because there is a manager basically role as well. Okay, and their रिपोर्टिंग्स, जो डायरेक्ट रिपोर्ट करने वाले बंदे हैं उनके अंदर, मतलब जो मैनेजर्स हैं उनके अंदर जो रिपोर्ट्स है वो चाहिए है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, आई विल बी यूजिंग ग्रुप बाय हियर. ओके, नॉट हैविंग. बस सिंपल, सिर्फ मुझे ऐसी कोई सिंपल कंडीशन के थ्रू डेटा फेच करना है, सो आई विल बी यूजिंग simple group by clause. Okay, so let's talk about query here. Let's demonstrate the query.
So this is my connect. I just connected the database here. Okay. What was the database I'm using? I'm using this database, right? So I'm just 1 second. Okay. And I'm selecting from directly here, master HRDPT, right? So in this HRDPT, what I want here, I want to fetch data about managers and their reports or reportees. Okay. So there I will be using group by clause. How I'm going to use, look at this. Okay. Select, say manager ID, comma, first name, comma, sorry, sorry, last name, okay, and the count of the employee ID who are direct reports. Okay, which table? It will be from employee table. Okay, employees or employees table. I need to check which name it is we are having. It's employees only. So I'm just making it an employee table where now what is the use of manager ID? I'll be using it manager ID is not null and then group by manager ID. Oh, why this is the error coming from the employees table? MANAGER. First name. Last name. Okay, let's first execute the query. What's the problem? Employee ID EMPLOYEE. Okay. Ma'am, is direct reports a variable? No. As a, as. Yes, ma'am. So as there, Yeah, it would be as. as would be there. Oh, it's still not working. Why it's not working? Okay, let's see. I'll just remove this first. Okay. इसको बाद में देखते हैं. As उसका नाम जो है अलाइज बोलेंगे उसको शायद अलाइज. But still, Ma'am, I think after last name you haven't put the comma, so that maybe. Ma'am, after last name, the comma. And then as reportees. Yeah, thank you. After reportees, I don't need a comma here. Yeah, now it will work. But still, employees dot first name column is invalid in the selected list. It is because okay. Now, if the manager who has at least 5 1 second, aggregate function और group by at a time use नहीं हो सकता है. Count. I'll be using employee ID only the count or a department ID.
Okay, do one thing. Try this query. Actually, logically, this query I am just writing in this manner. Can you just do it by your own? I'll make sure that I will be finding out this error, why this error is coming. To find the manager, the query is very Excuse simple. me, I'll ma'am. just write it. Yeah. Ma'am, could you try like with just manager ID and count and like just remove a first name and last name for a minute? We'll find out, but I don't think so it will work. But yeah, let's see. It's working. Why so? I am really don't understand why it is not working with the. Okay. See, for as we are using कि वो column का name क्या आना चाहिए. That's why I had used as. तो वो report की column name आ रहा है. My concern here is why I am not able to take a first name and the last name. One second. Still, it's not identifying with this. Okay, let me check why it's not coming. Okay, meanwhile, you just try with this, with the group by clause, without taking first name. I don't know why it's not working. I need to check why it is not working here. Remaining, ये जो query अभी लिखा हुआ है, using group by, ये execute करके देखो. With just a manager ID and reportees. Direct reportees, I mean to say. वो error क्यों आ रहा है first name पे, वो मैं check करती हूँ तब तक. Ma'am, Try using like first name and last name in the group by clause once. If I just use it group by manager ID, you mean to say, no, I want into the manager ID group by only, no? You mean to say like this? Ma'am, but then it will also show the first name and the last name also. I don't know, maybe. You tried it? No, it's not. No, ma'am, you have to add, I think so, first name with the select command also. Maybe. No, select command पे तो error ही आ रहा है ना. वहीं तो Okay. error आ रहा है, वहीं तो problem हो रहा है ना. यहाँ पे जब आप बोल रहे हो ना मुझे first name ले लो, Yes, यहाँ ma'am. पे वहीं error आ रहा है. I need to check why this error is coming. Okay. You are saying this, right? No, ma'am, now add with group by also. You have added with select Group by नहीं and जाएगा, now ऐसे नहीं with जाता है. group by. No. Before Okay, table name, you okay. cannot use group by. Okay, ma'am. Okay, after table only you can have a group by, because group by is used for the condition. Okay. Yes, ma'am. Yeah, okay. अब यहाँ पे ये, yeah. Ma'am, can you please explain the working of group by once again? Group by working of. Group by, how it works? Okay. See, if I just remove this first name for a time being because it's showing the error, let me explain you the first group by clause. Okay. Now what happened here when I'm using a group by clause? So what I'm getting, ideally what I'm getting, those who are the manager. Try to understand. Every employee is not a manager. Okay. So in my employee table, there are only few managers with these IDs, manager IDs. Are you able to see? Yes, ma'am. Okay.
Now they are also having certain reportees. It means that some employee IDs, okay, I got my error, basically reason as well. So if you just see here, the people who are manager, they are having employee ID. It means that the employee table is mapped, or we can say employee table is also having association with the employee table. Okay, so one employee can be a manager and associated with the employee table. Are you understanding this? So the manager ID, which I had taken here, it is basically coming from the same table. So every employee is not a manager. So if I'm just typing a select first name and last name, so obviously it will give an error because every employee is not a manager. Okay, those who are manager, only we will get it with the help of manager ID. Okay, so the error which I am getting now, that is the explanation I am giving you. Coming to the group by, it means that whoever we are getting, okay, whoever we are getting as a data of employees, they are the managers. So all these 10 are the managers, and these are the reportees. These are the reportees under them. Are you clear with this? Reportees under Yes, them sir. means the employees who are working under basically managers. Clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Now, the further step is, if I want to check those managers whose direct reportees are greater than 5. So how I am going to have it in the same query? I'll be just having, Ma'am, having count greater than 5. no, having directly reportees greater than equals to 5. Ma'am, it's reportee, not reportees. Oh, Yes. Ma'am, using having by. no, not having by. It's only having. Ma'am, I guess like you'll have to remove count from the select statement and put count employee ID in the having statement. No, it will not work with the help of count. It will not work. You can try it, but it will not work. I'll do one thing. Okay, ये query को हम यहीं छोड़ते हैं for some reason because it's not working out. और वो starting से चालू अगर ऐसा हो गया ना तो फिर आगे का query execution बहुत difficult होते जाएगा. I'll just give you one another query here. Okay, I want to calculate the sum of salary. Okay, sum of salary from the department. Okay, and select only department with the sum of salary between 20,000 to 30,000. मुझे ऐसे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने हैं जिनका सैलरी का समेशन मतलब सम कितना है 30,000 टू इन बिटवीन ऑफ 20 to 30,000. Are you clear with the query? Group by. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, in the previous query, ma'am, just try with having count employee ID greater than 5. It will work. You mean to say this? Yes, ma'am. It's working. Thanks. I hope everybody understood what exactly we did. I want the employees whose reportees are more than 5. So I will get it like this. Is it clear?
See, if you are doing along with me, that would be really great for both of us. Okay. I also come to know where you are facing problem, and whatever I am doing, some changes because it's a kind of practice. Okay. So even I am also writing query and I'm getting error. I'm solving it. Okay. So if you are writing a query, if you are getting error, we can solve it here only. So please do it along with me. Are you getting or are you doing? What are you doing? I'm giving you time actually. Done? Now we are talking about some of the department salary, which between the 20,000 to 30,000. Okay. So this is a between part as well as the summation part. So I had used a sum from my employee table. I am grouping out with the help of department ID, where having sum in bracket salary between 20K and 30K. Order by sum salary. 1 second. Just complete this query and execute. Okay, I'm so sorry. I was sharing my screen again. Okay. Yeah. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. So can you execute this query? Have you executed or not executed? So you will get the departments whose salary. See, try to understand. मतलब हमको क्या मिल रहा है? हमको ऐसे डिपार्टमेंट्स मिल रहे हैं जिनके अंदर काम करने वाले लोग जो है, मतलब एम्प्लॉय जो है, उनकी जो सैलरीज का समेशन है ना? किसी को 5 मिल रहे, किसी को 10 मिल रहे, वो सब मिला के उनकी जो सैलरी का समेशन है वो किस रेंज के बिटवीन में आ रहा है? 20,000 से 30,000 के बीच में, क्योंकि हमारा सैलरी बहुत कम क्वोशंट है ना। अगर आपने सैलरी देखा होगा किसी एम्प्लॉय टेबल में, तो सॉरी, यू विल सी द सैलरी इज वेरी लेस, मतलब जैसे 5,000 6,000 ऐसी सैलरी है, राइट? अगर आप एम्प्लॉय टेबल की सैलरीज देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा सैलरीज आर वेरी लेस हियर. लुक एट दिस, देयर आर वेरी फ्यू सैलरीज लाइक दिस. ठीक है, गॉट इट? तो हमको क्या Yes, मिला ma'am. अभी? हमको क्या मिला इस क्वेरी से? व्हाट वी गेट? वी गेट दोज डिपार्टमेंट्स whose salary is between 20 to 30 and order by with the help of salary. तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज यूज करी? वी हैड यूज अ aggregate function as a sum, we had used a group by, क्योंकि हमको डिपार्टमेंट्स ही फाइंड आउट करने हैं, प्लस ऐसे डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है जिनकी सैलरी जो है 20 से 30 के बीच में है, और उसको ऑर्डर करके हमको प्रेजेंट करना है. ऑर्डर मतलब जस्ट फॉर ऑर्डरिंग. सो ऑर्डर क्लॉज कोई बहुत इंपॉर्टेंटली ऐसे कोई बहुत रोल प्ले नहीं कर रहा है, बट या आई जस्ट यूज ऑर्डर बाय ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 3 मेजर क्लॉज हम यूज कर रहे हैं. इज इट क्लियर?
जब हम ये 3 क्लॉज यूज कर रहे हैं, so we are not using where clause. Ma'am, can I also do it without group by? See, why should you go with the group without group by? I want a group by with the ID ना, department ID होनी चाहिए ना मेरे पास. Okay. करो ये एग्जीक्यूट करो सब लोग. Yes, ma'am, done. Done, very good. See, let the other also work on it. मैम मीनवाइल आपने जो पहले क्वेरी बताई थी जिसमें आप फर्स्ट नेम में एरर आ रहा था, मैंने वो क्वेरी solve- चलाई है तो Ma'am, उसमें excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, I guess like if we are writing select first name, manager ID, and last name in the select statement, then if maybe if we write it in the group group by by clause also, also, then yeah, I guess we yeah, get ma'am, them. Right. that's Yeah. what I'm saying. Yes. Same. You can try with that. Once it is done, please let me know. Okay. The next thing we are having today is I just want few basically queries to be given as an assignment using all these clause. Okay. So can I give certain homework for practicing? Will it be okay to you? Yes, ma'am. Okay. So just have it like a we had already seen about some function, right? Now SQL with SQL having clause, okay, having with mean function. Okay, so to find, यहाँ पे कौन सा query बता रही हूँ, just write it. Understand, to find the department that has employees with the lowest salary. Lowest salary greater than 10,000. Okay, so how you are going to write this using min function? You can easily have it. Similarly, max भी ऐसे use कर सकते हो. Okay. Similarly, you can use a max also. So same way you can use max.
Okay. Now let's talk about few other things. Okay. So, okay, having done this, done. Okay. Now we will talk about the subqueries. So let's begin with the subquery today. So can you just explain me what is subquery? Am I audible or not? मैम क्वेरी इन क्वेरी मैम आई थिंक क्वेरी के अंदर हम एक और छोटी सी क्वेरी अगर लगाते हैं तो सब क्वेरी कहलाएगी. Okay. Yeah. Basically, what is subquery is a kind of tool. Okay, it's a kind of tool. And what happened with this tool? What happened with this tool? That is all okay. That subquery is within a subquery or all that. Okay, that is all okay. I just want what exactly the use of that tool. Yes. It's a very important thing, okay? What is subquery? It's a very important even question also, okay? So I'm just giving you a few notes about this. Ma'am, to make a query smaller or No, to no. It's not like that, okay? I'll just tell you here, okay? A query, okay, ma'am. within a query, another query, or a statement. Okay? Them to repeat the query again. No, not exactly like that. It also allows you to see or to use, I mean to say to use the result of one query as input in another query. इंटरनली ऐसा काम करता है, ये पता है क्या? इंटरनली ये जो आपका रिजल्ट स्टेटमेंट, सॉरी, ये जो रिजल्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, ये वाले, यहाँ का पार्ट, किसी भी क्वेरी को एक रैंडमली हमने जब फायर करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है ना, ऐसे ये जो रिजल्ट मिला है, ये दूसरे क्वेरी के लिए इनपुट जाता है. आप समझ रहे हो चीजों को मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे लिख के जो दे रही हूँ? Are you connecting what I am actually writing and explaining? Yes. Yes, ma'am. Okay. So basically एक क्वेरी फायर होगी, उसका रिजल्ट सेट आता है, मतलब वो कोई दिखता नहीं है ऐसे और आपको कोई सिलेक्ट करके फिर से डालना भी नहीं है, वो इंटरनली ऐसे काम करता है. तो क्या होता है कि आज हमारे पास डेटा सेट बहुत कम है, छोटा सा डेटा सेट है, हार्डली एमबी में होगा वो डेटा सेट. But try to understand when you actually work on the data set which is a GBs or a TB in the size, okay? मतलब टेराबाइट साइज का डेटा है, जीबी साइज का डेटा है, मतलब बहुत ह्यूज डेटा की बात हो रही है यहाँ पे. तो आपको, अगर आप एक सिंपल सा क्वेरी फायर करते हो
ओके, जिसमें आपने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है, उसमें ग्रुप बाय लिखा है, हैविंग लिखा है, बहुत सारी चीजें डाल के आपने उसमें क्वेरी फायर करी, तो वो जो रिजल्ट आता है ना, उसमें ना टाइम कंज्यूमिंग होता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग पार्ट। और वो जो टाइम लग रहा है वो क्यों लग रहा है? बिकॉज वी आर राइटिंग अ सिंपल क्वेरी। ओके, सो यूजिंग सिंपल क्वेरी वी आर गेटिंग रिजल्ट, नो डाउट अबाउट इट, कि हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट तो मिलना ही है, but the time which is being taken by your SQL server is very high. To reduce that time and also to understand or to make the complex query easy. Okay, मतलब अगर आप हैविंग लगा रहे हो, ग्रुप बाय लगा रहे हो, पता नहीं 2-3 कॉलम लगा रहे हो, एवरेज फंक्शन लगा रहे हो, बहुत सारी चीजें आ गई, तो क्या होगा? देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ द सिंटेक्स एरर, जो अभी मैं करवाते टाइम भी हो रहे थे, राइट? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम यू हैव टू टाइप इन द प्रॉपर ऑर्डर विद द लॉजिक बिहाइंड इट, कि मेरा पर्पस क्या है उस क्वेरी का। तो जब ऐसे सिचुएशन आती है तो हमारे पास एक नया फीचर ऐड होता है, मतलब एक नया फीचर है हमारे सीक्वल में, दैट इज सब क्वेरी। अब ये सब क्वेरी क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ टूल, रहता वही है, सिंटेक्स हम वही लिखने वाले हैं, कुछ नया नहीं होने वाला है, बस क्या होगा, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। ओके, सो व्हाट विल हैपन, जो अभी हमने ये सारी जो क्वेरीज करी ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जिसमें डिपार्टमेंट आईडी कहीं और से आ रहा है, सैलरी कहीं और से आ रहा है, समथिंग इज कमिंग सम डिफरेंट डिफरेंट वेज इन द फॉर्मेट, हालांकि ये चीजें इतनी कम है कि जस्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आई एम गेटिंग दिस, बट जस्ट ट्राई टू इमेजिन if you are working in say huge database, let's say in a 1 TB database, okay, and then you are firing such kind of queries, what will happen? It will take so much time to execute. Okay, to avoid such situation, we will be going with the subquery. Point number 1, it's very important. Okay, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ओके सीक्वल आता है, ओके आपको ये सब पता है, ओके, लेकिन अगर मेरे पास देखो कैसा है, सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं बहुत से बार इंटरव्यू में, so some people may ask you like if I am having a database, okay, let's say I am having a weather forecast database and it is of the size say 1 TB, and now I want to fire a query with for certain parameters कि मेरा location से, let's say my location is say Pune, so what will be the forecast under Pune location with the west or east or north zone in the next month or previous month, or what kind of statistics it would be, or what kind of data it would be. So उस केस में ऐसे query जब हम fire करेंगे जहाँ पे having और ये सब लगाएंगे तो उसका इफेक्टिविटी नहीं आएगा। टू मेक इट मोर इफिशिएंट, जो क्वेरी राइटिंग है उसको इफिशिएंट बनाने के लिए आई विल बी यूजिंग सब क्वेरी। तो वहां पे आपको हैविंग क्लॉजेस या आप ग्रुप बाय यूज करोगे, आप ये बताओगे दैट्स ओके, बट आपको उसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, टू मेक इट रिजल्ट क्विक एंड एफिशिएंट वी कैन यूज सब क्वेरी। दिस इज द आंसर एक्सपेक्टेड। इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? Yes, sir. Okay, now let's begin. Let's begin with this. Okay, so I'm just explaining you. It allows you to use the result of one query as an input in another query. Okay, and the subqueries are enclosed in parentheses. Okay, वो parentheses में होते हैं, मतलब brackets में होते हैं. So there is a syntax we need to follow. Okay, and it can be used in various parts of SQL statements, including select, from and where. मतलब कहाँ कहाँ, मतलब इसका मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हो सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर क्यों लिखा है? इसका मतलब एकदम सिंपल है, जो सब क्वेरी रहेगी वो सिलेक्ट के बाद लिख सकते हो, फ्रॉम के बाद लिख सकते हो और वेयर के बाद लिख सकते हो। इज इट क्लियर? And they are basically powerful
tool for retrieving and manipulating data. Clear? Are you clear with this? When you should or when you would use it, tell me. Ma'am, when we have to use a lot of like clauses, like when we have like in previous queries, we are getting data from some another table, like departments table also. In this condition, when we have to use too much clauses, we can use subqueries. Okay, I'll explain you this also. I'll just giving the Or information. ma'am, maybe, Yeah. Okay. ma'am, maybe when like we have to retrieve data from two tables, then also. Okay. But there, yeah, means along with the join, you mean to say, right? Yes, ma'am. Yeah, that is possible, right? That is also possible. So basically, when I want to use subquery, when I want to retrieve a data based on the result of a particular query, say another query. So I will be using subquery because the output of one query as a filter, or we can say the criteria for another query. I hope you are understanding this now. The second is to simplify the complex queries, as I told you all earlier also, right? So going into the subquery pattern is much more basically reduce the complexity between the queries, like having group by. ये बहुत सारे complicate करने से better है कि you just go with the subquery option. So why? Because it will break down your. See, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ आज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So it will actually it will break down your complex problems into smaller one. मतलब ये जो हमारा बहुत complicated जो query लिखा रहेगा, it will actually make it a easier one and it is more manageable. उस केस में errors भी कम आएंगे. Manageable means कम error आएंगे, syntax error कम आने के chances बन जाएंगे, and also it improves the query readability and maintainability. So this is how the things work with the subquery. Then it also used to perform aggregation within a query, which calculate aggregate function on a subset of data, such as finding the average or sum or mean or max. Okay, so this is basically the use of your subqueries. Okay, इसका एक generic syntax बताती हूँ. This is a generic syntax. Okay. Select call 1, call 2. जितने भी कॉलम सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लो. फ्रॉम सिंपल टेबल, जो भी आपका टेबल रहेगा, से टेबल, राइट, जो भी टेबल रहेगा, टेबल नेम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे. वेयर कंडीशन इज माय वेयर कंडीशन, राइट. वेयर कंडीशन और वेयर के आगे
कॉलम, यहाँ पे रहेगा ऑपरेटर, ओके, जो काम करने वाला है सब क्वेरी पे। तो आगे भी एक क्वेरी लिखी जाएगी, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम अनदर टेबल वेयर कंडीशन। क्लियर? Yes. So here column 1 and column 2, they are the columns which you want to retrieve. ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा है ये क्वेरी लिखने का, सब क्वेरी लिखने का, वो कॉलम 1 और कॉलम 2 के लिए रहेगा हमेशा। कहां से रहेगा वो? आएंगे कहां से वो? हमारे मेन टेबल से आएंगे, टेबल नेम जहां पे लिखा हुआ है। ओके, सो टेबल नेम विल बी आवर मेन टेबल फ्रॉम विच वी वांट टू सिलेक्ट द डेटा। सिलेक्ट द डेटा मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 वाला डेटा। ठीक है, जो कॉलम है सिर्फ कॉल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, ये कॉल क्या काम कर रहा है? ये कॉलम वो है, ओके, ये कॉलम वो है विच यू वांट टू कंपेयर और अ फिल्टर अगेंस्ट इन द मेन टेबल। मतलब आपको ये एक फिल्टर क्राइटेरिया मिल रहा है। कौन सा? ये कॉल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर फिल्टर क्राइटेरिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिल्टर Yes. क्राइटेरिया हमारा अभी डिपार्टमेंट आईडी था, ठीक है, ग्रुप बाय हैविंग में, और ये सब अभी जो लिखा उसमें फिल्टर क्राइटेरिया क्या था? हमारा डिपार्टमेंट आईडी। सो यहाँ पे ये जो कॉलम है वो क्या है आपका? फिल्टर, जो भी कॉलम रहेगा वो रहेगा। ओके, एंड देन ऑपरेटर। सो व्हाट आर द ऑपरेटर्स वी कैन यूज? ऑल योर लॉजिकल सॉरी, ऑल योर कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार यूज करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे यूज किया जा सकता है। ओके and this is your another table. So another table which you want to retrieve the data for the comparison. So आप another table भी यहाँ पे add कर सकते हो with the specific condition. Clear? Clear or not? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, ये सब क्वेरी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड whatever things we did till date, the same way we are going to do. Okay, बस ये रहेगा कि हम एक क्वेरी फायर करते थे और आंसर देखते थे। यहाँ पे हमको एक के अंदर दूसरी क्वेरी लिखना है। दैट्स इट, दिस इज ओनली द डिफरेंस। ओके, ना यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ओके, सो आपको ये करके, मतलब यू नीड टू ट्राई इट। ओके, सपोज यू हैव टू टेबल्स। ओके, व्हाट आर द टेबल्स वी आर हैविंग? सो लेट्स से वी आर हैविंग हमारे खुद का ही जो डेटाबेस है उसी की बात करते हैं। वी आर हैविंग एम्प्लॉइज एंड द डिपार्टमेंट टेबल। ओके, and you want to retrieve the names of employees in the sales department. So how you are going to use this? So how you are going to write this? Tell me, fatafat. Or think about it. I'm not asking you right now. I'm just giving this as a assignment. Chat box open karo. Ma'am, Yeah. Do we like look for common fields? Like for example, if we have department ID in employee table also, and then department table also, then ma'am, can we write something as like, as you said, that we have to retrieve the names of the employees. So ma'am, can we write like select employee names and like the employee ID from employees, where department ID is equal to select department ID from departments, where department is equal to sales. Right. This is what I am expecting. You can try this. Okay, this is only the way it will work. And those who are not immediately just thinking about this,
they can just take, just copy this small question from the chat box, and they can do it maybe afterwards. अभी ये जो सब क्वेरी कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे डेटाबेस में नहीं रहता है, सीक्वल में है, माई सीक्वल में भी है, मतलब सीक्वल सर्वर में है, माई सीक्वल में है. Those who are using maybe SQL Lite, SQL Express, उनको शायद यहाँ एरर आ सकता है. ओके, इवन पोस्टग्रेस में भी नहीं चलेगा ये, पोस्टग्रेस SQL में भी. I think it was not there in the earlier version, but I don't know the recent version they're supporting or not. Ma'am, it's working PostgreSQL also. Okay, it's working fine then. Because in the older versions, which I had used, in that the subqueries were not being basically working out. Okay, so this is the kind of subqueries we are going to basically execute. Okay, maybe we need one more class because joins still remaining. So joins or subquery, or just to brief the concept, we can use our next basically day, that's on the Wednesday, and we will complete the SQL topic. Okay, subqueries now, they are having types. Okay, so there are types of subqueries. So now next thing you had to explore is the types of subqueries. Okay, so subquery के type पहले से explore करके आओ, so that I will directly getting into the environment and I will be executing here directly. Okay, I will be not again revising this the subquery types. Okay, subquery explain करा हुआ है, types आपको सिर्फ देखना है, और वो आप देख के आओगे तो next topic आपको understand होने में easy जाएगा. This is what is my concern here. And this you have to practice the query which I had given you on the subquery topic. If you don't find solution, no worries. I will be explaining in the next session. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. So we will stop here today, and we will connect you on the Wednesday. And meanwhile, whatever be the things we discussed, please revise it and start preparing some case studies, more data. You can have it, you can make it, you can create the database, you can create the tables, and you can start implementing the queries over there also. कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मैंने जो database दिया है उसी पे काम करना है. You can have your own thought and you can just get it done. Yeah, Nitik, you are trying to say something? Ma'am, is a mic glitch, ma'am. Oh, okay. Ma'am, I have one question. Yeah. Ma'am, how to use alter query, ma'am? Alter query is very easy. Where the problem you are facing? मैम मुझे वो ऑल्टर टेबल समझ नहीं आया था मैम, मैं क्वेरी कैसे फायर करते हैं? अच्छा, ऑल्टर समझ में नहीं आया आपको? यस मैम. Okay. I thought where the problem comes. Okay. I'll just explain 1 second. Just give me 1 minute. Okay. So alter मतलब क्या? मैम डेटा के साथ ऑल्टरेशन लाइक मैनिपुलेट करना या डेटा ऐड करना. ऑल्टरेशन हमेशा होता है किसमें? It will come. Just give me 1 second. हाँ. स्कीमा में चेंज करना. What I am explaining, alter means what we are altering basically the schema. मतलब क्या कर रहे हैं हम? Schema in the sense टेबल का स्ट्रक्चर. एक आधा कॉलम ऐड करेंगे, एक आधा कॉलम डिलीट करेंगे, एक आधा कॉलम का नेम चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे.
in the existing table. This is the use of alter table option. Are you understanding this? Yes, ma'am. Okay. So I'll just create a one simple table, just a random table I'm creating. Ma'am, your screen are not visible, ma'am. Oh, 1 second. Okay. So let's talk about any table. I'll just check a random table. Oh. So this is my table. Okay. So in the temp for demo. So I'm just using this table only. So temp for demo, I am in the temp for demo and I just want to check what is the table is. So in this, there are few things. Are you able to see? There are few columns in it. Are you understanding ना? कहाँ मैं check बता रही हूँ आपको एक temp table पे काम करके बता रही हूँ. I don't want to disturb our table structure. Okay. Okay, ma'am. Okay. So I'm just making here. So what I want to do here, I want to make some changes. I want to add one column. Say employee ID, employee name, address, contact number, or BOD is birth date. Okay. So I just want address. I just want a city. Okay. एक city column add करना है मुझे उसमें. How I'm going to do this? Alter table name. What is my table name? Temp table. Alter table. Okay. Table name. Okay. Add what I want, column. Say add city. City. Say city name. उसका type क्या होगा? Varchar. I will be executing this. 1 second. I'll be executing this. Now command completed successfully. Okay. Now I have to refresh this because to check it. So if I just click here, I'll see that city name is being altered here. Understood? Yes, ma'am. Okay. Now similarly, you want to add email address. Let's say email address you want to add. The same way you can add an email address. Suppose you want to delete something. Okay. So what you're going to do instead of add, what you're going to type here? Ma'am, delete. Or Delete form. Ma'am, is a whole table deleted? क्या particular column? If I just want to make changes into the delete one into the structure, it is not possible. I had to drop the table and I had to recreate it. I can change the name of the column name here. Okay, but I cannot make any changes with the deletion of the basically what I say. I mean to say drop from the column name. Okay, if I just want, okay, I am in the admin part, so I can do it. Okay, I can use a drop here. So I'll be not using varchar because it already exists करता है. Okay, so I'll be just dropping it. It will work because I'm in the admin role, so it will work. Constraint could not drop constraint because see the previous error. Okay, city name is not a constant. Okay. Okay, if I just drop something else. I had not used any constraint here. So not null वाले जो column है मैं वो उनको delete कर सकती हूँ. So I just use the address here. Address, yeah.
Plus error is not a constraint. Okay, drop. ID. I think you have to write column, drop column. No, directly we need to use drop the column name. No column word we are Okay, going to use. no need. It is not necessary. No. POD is a column name only, ना? और city name is a column name only. प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि इनको हमने कंस्ट्रेंट नहीं दिए हुए ना, प्राइमरी की ये वगैरह दिए नहीं है ना, इसलिए वो नहीं कर रहा है. Okay. You have to just give the constant to it and then you can apply the drop. Okay. So we have to drop the whole table if we have to change a column. Only column we are dropping. Okay. See, let me first explain you the modification as well. So alter table name है यहाँ पे. I just want to modify something. So modify column modify column modify I just have a no modify यहाँ पे use नहीं होगा, modify alter column, okay, with the if I just want to make a column name change, okay, so city name with the text, okay, text type का data बनाना है उसको, varchar में लिया था, अगर मुझे उसको text type का data बनाना है तो I can use this. Yeah. Now यहाँ पे जो varchar आ रहा है, then it become text format, so I can change the data type also. So mainly this all thing will work on the schema. देखो यहाँ text हो गया. It will work on the schema. Is it clear? Who had asked me the alter wala question? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Fine. Okay, then we will stop here today and we will meet on again Wednesday and we will continue the remaining topic. I hope on Wednesday we will complete the SQL majorly. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.